सीन ये हुआ था कि इंटेल आउल जो है ना, इसका अब जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है ऑर्ग सिलेक्शन में, कि हमने सपोज ऑर्ग सेलेक्ट भी कर ली, सब चीजें मैच हो गई, हमें सब मिल गया, हम कम्युनिटी भी सही लगा, एवरीथिंग वर्क्स, बट प्रॉब्लम जो नेक्स्ट पे आती दैट इज सेटअप। इस कोड को सेटअप करने में मुझे कहीं टाइम लग गया था, बिकॉज देर लाइक जरूरी नहीं है हर मशीन में चले ही चले, so every machine is different, तो इस कोड को सेटअप करना, so I think that is something जो सबको बेसिकली आते ही होगा, you just simply go here, you take this link and you put git clone and simply clone this repository, and then accordingly you run it and this. So in Docker there's simply you type your commands, sudo docker compose, make migrations, run, ये सब रहता है, ये तो उन सबको आप रन कर करके, तो दैट इज लाइक सिंस इट वाज डॉकर, सो इट हैज अ स्पेसिफिक लिस्ट। अब इसका डॉक्यूमेंटेशन था, यू गो थ्रू इस डॉक्यूमेंटेशन, इन्हीं में इनका ये रीड मी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज फॉर डूइंग सेटअप लाइक दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एट दैट लाइक थिंग, सो जस्ट ये डॉक्यूमेंटेशन जरूर पढ़ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, रीडमी पेज में मिल जाता है। अब ये इंटेल आउल का जैसे डॉक्यूमेंटेशन था, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि कोड को सेटअप कैसे करना है, कोड को राइट करना है, कि इसके बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं, अगर तुम ऐसे ही कैसे भी कंट्रीब्यूट कर दोगे, दैट प्रोबेबली वोंट गेट एक्सेप्टेड इवन इफ यू आर राइट। सो इंस्टॉलेशन, अब जैसे इसमें इंस्टॉलेशन पेज था, इस इंस्टॉलेशन पेज के हिसाब से एग्जैक्टली रिक्वायरमेंट्स को डाउनलोड करना और वो करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो मेरा सेटअप भी हो गया, आई स्टार्टेड वर्किंग फॉर द इंटेल आउट, बट इसके अंदर एक पर्टिकुलर इशू आया, जो बेसिकली सीन ये था कि यहाँ पर एक, नाउ जस्ट गेटिंग टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ यू वर्क फॉर द ओपन सोर्स, सो यहाँ इश्यूज लिस्टेड होते हैं। अब यहाँ क्या होता है कि इश्यूज के अंदर बेसिकली ये होता है कि, नाउ लेट इज सपोज we take this issue, support http/2 conversion to http 3. Now this is a problem and there is a problem description, and this all are things are in. So what you simply do is कि okay, आप देखते हो कोड सेटअप करते हो and then you took an issue. Generally I'll recommend कि जो issue होना चाहिए ना, अब इन पे tags लगे होते हैं, there is a kind, feature and this. So there's a label called as good first issue. जनरली वो सब और में यही फॉलो होता है, और जो थोड़े ऐसे फर्स्ट इशू होते हैं ना सिंपल, उन टैग से ही शुरुआत करो। सो व्हाट आई डिड कि आई वेंट टू दिस थिंग कि ओके, गुड फर्स्ट इशू काइंड ऑफ मैंने इसमें ढूंढा, एंड अभी तो इसमें नहीं मिल रहा, बट जनरली मिल ही जाते सिंपल इश्यूज, और या तुम स्लैक कम्युनिटी में जाके पूछ लो कि कौन सा सिंपल इशू होगा। सो आई स्टार्टेड फाउंड वन इशू एंड आई वर्क स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। नाउ व्हाट यू डू इज कि सपोज this is a bug which I am probably there getting Android simulator on. हाँ ठीक है. So you simply go and there are different ways of getting you assigned. So in my org, you simply type this and you'll get automatically assigned /assign. But some orgs have different. So you basically आपको बस पता करना होता है कि इस org इस repo का maintainer कौन है, कि इस like इसको कौन maintain करता है, which you can actually find it here. Yeah. So ये रहे contributors, और इसके अंदर you'll just simply figure out जिसके सबसे ज्यादा contribution होते हैं, और या पत लिखा होता है बहुत जगह, तो मिल जाता है डॉक्यूमेंटेशन, और मैं रीड करता हूँ तो मिल जाती चीज कि इन सबका बेसिकली कौन है मेंटेनर, एंड देन यू सिंपली आस्क हिम कि आप उसको मेरे को ये पर्टिकुलर इशू असाइन कर दो। दैट इज अ जनरल एटिकेट जो आपको बेसिकली, जैसे अब इसके अंदर जो इसका डॉक्यूमेंटेशन था उसके अंदर ये देखो कंट्रीब्यूट में ये चीज लिखी होगी, रूल्स, contributor from anywhere of any kind of education the skill level and this, so everything is written, code style क्या होनी चाहिए, how to start, back end में कैसे होगा, everything is written here, but एक बार इनके थ्रू जाना बहुत जरूरी होता है। so yeah, this is the point कि अब ये जो कवर अप करना, और उसके बाद उसका जो पर्टिकुलर और का मेथड है, जैसे मेरी और का तो सिंपली /assign था, इस और का कुछ अलग होगा, तो ऐसे असाइन करा के व्हेन इट इज असाइंड टू यू, नाउ यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। अब वो प्रॉब्लम कोड पे तुम काम करना स्टार्ट करते हो, तुम कोड बेस को समझते हो, तुम पूरा प्रोग्राम समझते हो विद द डॉक्यूमेंटेशन और एनी अदर मैनुअल अवेलेबल, और बाय आस्किंग इन द स्लैक। सो व्हाट हैपेंड टू मी कि इसका एक बग था जो मेरे को बहुत ज्यादा स्ट्रक कर गया था, एंड आई वाज सो इगोइस्टिक कि ऑलमोस्ट 1 मंथ तक मैं सिर्फ इस बग पे था कि अब इसे सॉल्व करूंगा। लाइक if someone from backend, I like I'll tell you कैसा उसमें था कि basically दो अलग अलग machines में दो अलग अलग systems को local उसको host करके दोनों को connect करना था, and then you were able to just
set up that thing for an issue. ऑलमोस्ट मुझे उसके लिए एक एजोर का सिस्टम बनाना पड़ा, उसके अंदर वो करना पड़ा, एक बार इधर लोकल होस्ट और एक बार मुझे उसको एजोर पे होस्ट करना पड़ा, एंड देन आई हैव टू कनेक्ट देम टुगेदर टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, एंड उससे एक बेसिकली वो सर्विस एजोर वाली सर्विस को रन करता था, एंड देन फाइनली दैट इशू वर्क्स। बट उसके सेटअप को ही फिगर आउट करना बहुत हार्ड हो रहा था। उस पॉइंट पे रियलाइज की मुझे ये और छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है। अगर मैं इसमें फाइनली 1 महीने बाद अराउंड कुछ एक कंट्रीब्यूशन भी कर पाऊंगा, वो इतना इफेक्टिव नहीं होगा। तो आई लेफ्ट दिस ऑर्ग हियर एंड आई वेंट फॉर सर्चिंग अनदर बेटर ऑर्ग, कि अब मेरे और टेक स्टैक या उसके लिए कौन सा बेटर रहेगा। तो देखो, इट इज नॉट जस्ट कि ये और में टफ है, ऐसा कुछ नहीं है। वो जनरली बस मेरे साथ अलाइन नहीं हो रही थी। कई बार वो चीज हो जाती है कि जिंक्स हो जाता है कि नहीं हो रहा है, तो फिर वो नहीं होता है। तो डिफरेंट ट्रेंड, देन आई केम टू दिस ऑर्ग दैट इज ओवास्प फाउंडेशन। अब ओवास्प की बात ये थी कि ओवास्प भी सिमिलरली ऑलमोस्ट हर साल आई है, had a very good acceptance ratio. So I was like कि हाँ, मतलब ये हो जाएगा, and again aligned with my tech stack. So इधर देखो Django और Docker तुम्हें नहीं दिखेगा, but actually they work with it. So Python मैंने देखा and I went कि okay, we can work for it. So I simply went here. अब OWASP की शायद थोड़ी डिफर करती है, तो इसमें तुमको एक्चुअली प्रोजेक्ट्स में आएगा। सो ऐसे हर अलग 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 साइट का अलग अलग रहता है। सो आई वेंट टू दिस एंड देयर इज लाइक एवरीथिंग मेंशन्ड कि इंस्ट्रक्शन फॉर पार्टिसिपेंट, स्टूडेंट, रिकमेंडेड स्टेप्स एंड दिस। सो या मेरे लिए और ज्यादा बेटर वर्क कर रही थी। फिर आई वेंट टू लर्न अबाउट इट्स प्रोजेक्ट्स, सो वो भी यहाँ लिस्टेड है एक्चुअली। सो वो चीज अब आप खुद कर ही लोगे, बिकॉज अब इतना आई थिंक समझ आई गया कि एग्जैक्टली कैसे लाइक जाना होता है। दिस इज लाइक ये ओवर्स ऑफ कोड की प्रोग्राम वाली साइट है। सो दिस इज जस्ट शो यू ओवास। एक्चुअली मैं अभी वाले से दिखा देता, 24 प्रोग्राम से दिखा देता कि उसमें अनाउंस्ड। सो आपको बस प्रोजेक्ट फिगर आउट करने पड़ते, टेक्नोलॉजीज फिगर आउट करनी पड़ती है। दिस इज हाउ यू फिल्टर और विथ 2-3 पॉइंट्स इन योर माइंड की एक वो ऑर्ग में एक्सेप्टेंस अच्छी होनी चाहिए, कोड सेटअप हो जाए, प्लस वो ऑर्ग आपके टेक स्टैक से अलाइन होनी चाहिए, एंड प्लस वो बहुत 2-3 सीजन से आ रही हो, तो देन यू ओनली टारगेट फॉर दैट ऑर्ग। सो या दिस इज दिस थिंग। Shish, I was just asking like how one can write proposal for the organization. Like we have to write या proposal also on a GSoC. Yeah, so we'll come to that part now. अब contributions वाला भी मैंने पूरा process explain कर ही दिया है कि how do you make contributions and everything is done. So do's and don'ts are there कि अब get it over fancy. So just go through this once. So this like देखो, एक सर्च बार इज गूगल का जीसो का जो सर्च बार है वो एग्जैक्टली वो नहीं होता है। तो जनरली और स्क्रैपर्स को उनको बेटरली यूज करो तो दैट वुड बी मच बेटर। दैट जैसे ये हो गया, अदर सबकी वो डिफर करती है, एमएल्स के लिए होता है। अब वील कम टू दैट पार्ट ऑफ प्रपोजल डेफिनेटली। अब एक फ्लो चार्ट, हाँ दिस इज वेरी गुड फ्लो चार्ट। दैट फर्स्ट यू गो थ्रू लुकअपिंग ऑफ, तुम प्रोजेक्ट आइडिया देखते हो, पास्ट ईयर प्रोजेक्ट देखते हो, कोड बेस देखते हो, यू प्ले अराउंड। अगर इनमें कहीं पे भी स्टेप पेश आता है, इफ यू डोंट अलाइन विद द पास्ट ईयर प्रोजेक्ट्स प्रोजेक्ट आइडिया, यू सिंपली गो टू द अनदर अगेन लुक अप फॉर एन और यू गो टू द कोड बेस। अगर तुम्हें कोड बेस सेटअप नहीं होता है, यू सिंपली शुड कम बैक एंड वर्क। सो 2-3 दिन में अगर तुम्हारा कोड बेस सेटअप नहीं हो रहा है, सिंपली वापस आ जाओ, लुक फॉर अनदर और, बिकॉज वो चीज टाइम वेस्ट करती है। दिस इज द एडवाइस लाइक आई हैव लर्न लेटली, बट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। देन you see if you can make contribution। तो मैं इस स्टेप तक आ गया था कि मैं कंट्रीब्यूशन नहीं बना पा रहा था, तो आई जस्ट गो बैक। अगर मेरे कंट्रीब्यूशन हो रहे थे, आई वुड हैव सिंपली वर्क विद एन इंटेल, बट वहां चीज में मेरे को बहुत प्रॉब्लम आ रही थी कि कंट्रीब्यूशन नहीं आती, क्योंकि मेरे को समझ नहीं आता। एंड व्हेन यू वर्क फॉर द नॉक, तो अब कंट्रीब्यूशंस भी हो गया, सब चीज हो गई, देन दिस इज द वन, दिस इज द वन यू शुड वर्क फॉर। सो दिस इज द फ्लो चार्ट which you should follow. Some common pitfalls. Yeah. So the first pitfall: do not give up on an hour before until 2-3 days into the code base. So ये चीजें भी रहती है, and avoid all like which have few accepted rates around 3 to 4. Avoid all which not introduced in 1-2 season or
And do not stick to an org if you are trouble with the code based installation. Move on. So this was the point which जहाँ मुझे थोड़ी problem थी. Actually installation में contribution was the point. Linux, GNU और Python जैसी org से थोड़ा बच के, because ये बहुत competitive होती है और इनके अंदर बहुत ज़्यादा acceptance कम होती है. So yeah, these are few orgs actually जो like field type से. So front end there is like about code. I'll recommend about code. बहुत अच्छी acceptance rate है और बहुत सारे front end related projects है उसके अंदर. कुछ काफी ज़्यादा है. So you know React, you know about. So you start with about code. That's a very good security organization. In backend there is CDLI, OpenWith, OWASP, Sugar Labs, and बहुत सारी. These are just few. App dev के लिए है, ML के लिए, and miscellaneous. So yeah, just take a screenshot if you want to. Either will be circulating this, but we need a time to We can compile them. we can share this slide like on if Huh. someone want you can contact us like though she can Yeah, contact us on our contact number. Like if you need these single. slides earlier, so you can message me on LinkedIn or just throw me a mail. That will work. बाकी मेकिंग contributions तो मैंने पूरा बता दिया. PRs बेसिकली क्या होते हैं, एक ये लास्ट पॉइंट में और एक्सप्लेन कर देता हूँ because that is important. So in GitHub what happens कि when finally you feel कि oh I think मेरा काम हो गया है, so GitHub का तुम वो बना देते हो and finally एक बहुत बड़ी जो गलती होती है, what people you should like learn to work is, so suppose this is an हाँ, so अब basically जैसे ये org पे मैं गया, learn what is fork. Forking is very important because इसमें क्या होता है, ये जैसे स्लाइड्स के अंदर, गूगल स्लाइड्स के अंदर देखा ना, मेक अ कॉपी फॉर मी, ऐसे गूगल डॉक्स के अंदर होता है. जस्ट सिंपल वही फीचर है कि बेसिकली यू मेक अ कॉपी. सो दैट इज लाइक क्रिएट अ न्यू फोर्क. सो यू क्रिएट अ फोर्क. आई हैव क्रिएटेड वन दैट इज दिस BLT. सो दिस इज वन फोर्क. अब इस फोर्क का जो है ना, इसको क्लोन करना, रादर देन ऑर्ग का एक्चुअल क्लोन करने की जगह इसको क्लोन करना. यू सिंपली गो टेक दिस एंड क्लोन इट. अब क्या होगा कि जो भी तुम चेंजेस करोगे ना, वो तुम्हारे ही उसके अंदर चेंजेस होंगे. ऐसा नहीं होगी कि पूरे उसमें चेंज और के अंदर पुश कर दिया तो वो पूरा कोड बेस खराब हो जाएगा. जनरली एक्सेप्ट भी नहीं करते वो चीज. तो वही बात है, तुम मर्ज कर ही नहीं पाओगे. सो दिस इज द वे यू वर्क ऑन इट. कि अब सपोज मैं यहाँ गया, मैंने इसके अंदर काम करा, देन व्हाट आई डू, मेरे जो चेंजेस होते हैं, अब मेरे को लगा हाँ मेरा हो गया. सो यू गो टू ऑन दिस बटन, open a pull request. This is called PR. This is pull request. So अब यहाँ पर हम जाते हैं, you simply I have these changes. So you open a pull request and just think वो करते ना, ये थोड़ा बेसिक गिटहब तो यूट्यूब से सीख लेना. Then you put a title, you about a description कि ये मैंने changes उसके अंदर करे हैं. This is what I have done. So there is a discipline in org which has to be followed. So in my org what happens कि every time you need to make a new branch. Suppose I was solving issue 1774. So I need to make a new branch naming as issue 1774, and then I go to this contribute this and open a pull request. एंड उसके बाद में वो पुल रिक्वेस्ट डाल देता था. अब उसके बाद वो क्या होता था कि वास्प का जो पेज है, दैट इज दिस, यहाँ पर ये पुल रिक्वेस्ट का जो होता है ना ऑप्शन, यहाँ पर वो सारी पुल रिक्वेस्ट लिस्ट होती थी. ठीक है, तो इसके अंदर अब वो चीज मेंटर को विजिबल हो जाती है. एंड देन मेंटर व्यूज इट कि ओके ये है, एंड देन ही सिंपली बेसिकली आपकी वो एक्सेप्ट करनी होती है, या अगर एक्सेप्ट हो गई तो सिंपली गेट मर्ज इनटू द दिस अपस्ट्रीम. ठीक है, तो इधर जब वो मर्ज हो जाती है तो इधर दैट फाइनली गेट्स मर्ज एंड दिस कोड बेस में, एंड यू कैन सी योर चेंजेस. ठीक है, सो दिस इज कि अब जैसे इसके अंदर सिर्फ मेन ही है, तो जैसे जैसे चेंज हो गया, तब जैसे कुछ चेंजेस मेरे इसमें यहाँ पर वो दिखने लग जाते हैं, एंड दैट सिंपली रिफ्लेक्ट्स इनटू द साइट. बिकॉज हमने जो यहाँ कर रखा था दैट इज कि उसको जो है ना बेसिकली डायरेक्टली पाइपलाइन क्रिएट कर रखी थी कि यहाँ पर जैसे गिटहब के अंदर चेंज होगा, डॉकर अपने आप वो होस्टिंग में चेंज हो जाएगा. जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई विल कम एंड लाइट्स ऑन करके आ जाता हूँ. जस्ट गिव मी अ सेकंड. हाय, सॉरी. सो नाउ आई थिंक कॉन्ट्रीब्यूशंस वाला पार्ट भी लोगों को क्लियर हो गया होगा. इफ देयर इज एनी अदर डाउट जस्ट आस्क मी एंड वी विल गो विद द प्रपोजल पार्ट, बिकॉज अब वी आर शॉर्ट विद द टाइम एंड बहुत ज्यादा एक्सटेंड हो चुका है. सो Yeah, we can दिस इज अ like extend for 10 minutes more. Like. हाँ, that's all. So this is one, while I was writing my proposal, I'll share you this Notion page. ठीक है, so this is a very important part. ठीक है, proposal writing में basic scene
यह रहता है कि फाइनली आपने कंट्रीब्यूशन कर दिया. So I had 29 merged contributions and 37 around, I think 37 or some other that contributions जहाँ पर so that is thing. But point is कि that doesn't like अब वो अब तुम्हारे behalf पे the contribution won't speak. So you need some proposal. You need something from your behalf to speak. So that is the proposal. Okay. So yeah, that so making a contribution. So you just go and learn basically GitHub lab क्या होती है, GitHub क्या होता है, Git version controls क्या होता है. This is a basic thing you should learn. Experience में वही I had this and I had 29 merged contributions and this was my accept that mail I got. So yeah. Outcomes and this will go over it. But एक बार हम ये proposal वाली चीज़ देख लेते हैं. I hope you can see my Notion page, right? Okay. So what अब OWASP के ऊपर एक अलग गाइडलाइन दे रखी थी कि how exactly you should write a proposal. So what I did, I made an Notion page on it basically कि कैसे करना है. Now what you should see is like one very good thing was कि my mentor स्वप्निल शिंदे जो वो बंदा था वो पहले कंट्रीब्यूटर था. So like me, he used to be a contributor, he used to be a mentee, and then after getting selected one time, he became a mentor. So इसका YouTube पे video था. So while stalking the things around, I found his like video on YouTube. So he told, I was telling about his own proposal, कि how I write my own proposal. उसके अंदर he mentioned a very good point that ChatGPT is a thing which not everyone likes. So some of the organization will say कि यार oh ChatGPT use कर रहा है, he doesn't know coding. But in my org, Donnie sir was a guy who likes to like ChatGPT की काम कम हुआ, and this is a good thing if you are using it. So this is something which is an insider thing. So Swapnil, my mentor, told me in his YouTube video that you can mention कि I know how to use ChatGPT and I frequently use it कि मैं जैसे basic front end code है क्या, so to do that and to optimize and fasten my work. So that is something which may vary from org to org. About myself, past experiences and all, and बाकी OWASP की जो guideline थी, which is very good guideline that who are you, what are you studying, what exactly do you intended to do. So मैंने ऐसे सारी जगह से बहुत सारे ये चीजों को collect करा and I put it into one Notion page. KDE की guidelines, one of the best guidelines थी. So there, while writing a proposal, you should understand, define the problem, what is the current state of a thing, what is the issue you wish to solve, and why. Short and to the point, good idea, format it like a list, future developments का होती है. I can proudly say कि मेरा जो पूरा proposal था वो इन सब points पे align था. That's why वो 40 pages extend हुआ था, and I can say it is one of the lengthiest and one of the best proposal probably there. मेरे सामने एक बंदा था, he was having 60 contributions, 60 merge contributions. ठीक है. What that guy did is basically he started contributing from around September or something, and like he had a contribution till Feb he added 60 contribution, and till end I was having 30 contributions, but still my mentor messaged me and said me कि you are our first choice because that was about proposal, because मेरा proposal उतना अच्छा चला गया था. And other thing was also कि मैं what thing he did कि January February के बाद he was not that active कि एक बार उसको लगा सारे contribution अब हो गए, अब I'll take light. So वो बहुत कम contribution और बहुत inconsistent contribution करता था और community में भी active नहीं रहता था, जो कि पहले वो बहुत था. But as I started my work from February, so Jan पर मैंने Intel Owl को छोड़ा था end of the Jan, and Feb में मैंने OWASP BLT के लिए काम start करा. तो Feb से April तक I continuously contributed for BLT. In that meantime, I pulled 30 contributions. I was active in community and everything. तो वो सारी चीजें बहुत अच्छी play out करी थी कि अगर वास्प का सिर्फ एक ही slot आता तो I would be the first guy to select. तो ये चीज बहुत important play करती है कि proposal, even if you have low contributions and your proposal is good, you are having higher chances getting selected than contribution guy, because एक चीज बहुत matter करती है, that is contribution, एंड फिर प्रपोजल और ज्यादा मैटर करता है. तो ये है. बाकी टाइमलाइन तो यही रहती है कि जीसॉक 18 मार्च से एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाती है, 2 अप्रैल को एप्लीकेशन की डेडलाइन होती है, 24 तक रैंकिंग देनी पड़ती है, 1 मई द प्रोजेक्ट्स गेट अनाउंस्ड एंड फ्रॉम 1 to 26 में बेसिकली देयर इज अ कम्युनिटी बॉन्डिंग पीरियड जो मेरा आज बेसिकली था खत्म होगा, एंड 27 मई जो कल है, कल से मेरा स्टार्ट होगा, एंड दिस इज द फर्दर टाइमलाइन जो
हमको बेसिकली मिड सेमेस्टर तक मिड टर्म एवल्यूशन होगा, फिर वापस कॉम्प्रिहेंसिव एवल्यूशन होगा और फिर नवंबर में वापस से नेक्स्ट GSoC की तैयारी। ये कुछ और प्रपोजल है, जैसे ये मेरे मेंटर का ही प्रपोजल है स्वप्निल शिंदे का। सो इस प्रपोजल को देखकर ही मैंने अपना प्रपोजल पूरा बिल्ड करा था, एंड ही हैड अ प्रपोजल ऑफ अराउंड लाइक 30 पेजेस एंड सम सो, एंड ये कुछ और प्रपोजल थे जो अवनीश भैया, ही इज अ लाइक विद सीनियर, ही वाज सो काइंड इनफ कि उन्होंने मेरे को ऑलमोस्ट ऐसे निकाल निकाल के 4-5 प्रपोजल भेजे थे जब मेरी प्रपोजल लिखने की बारी आई थी, एंड उन्होंने पता नहीं कहाँ कहाँ से कौन से प्रपोजल निकाले थे एंड ही सेंड मी। सो ये सारे प्रपोजल थे अलग अलग फील्ड्स की, जैसे मशीन लर्निंग का था, ये और प्रपोजल, तो इन सबको एनालाइज कर करके मैंने फाइनली अपना प्रपोजल बनाया था, एंड दिस वाज व्हाट माय प्रपोजल frame was like, and this was a review with प्रखर भैया जो अभी सेलेक्ट हुए हैं, और सो वो पहले भी सेलेक्ट हो चुके थे 21 में भी, आई थिंक ही गॉट, नहीं 22 समथिंग ही गॉट सिलेक्टेड, एंड 24 में इस बार वापस वो सेलेक्ट हुए। तो आई मैंने उनको प्रपोजल दिखाया था, दिस वाज, ही सेड मी कि ओ दीस आर द सजेशंस, तो दिस ऑल द सजेशन आई वाज वर्किंग, which is actually very good suggestion, because almost मेरा सब देखकर क्या प्रपोजल देखकर ये कह रहे थे कि भाई बेस्ट है, वो बहुत अच्छा है, बट ही वाज द ओनली गाय वो क्रिटिसाइज कर पाया, और वो बहुत वैलिड क्रिटिसिज्म था कि मतलब आई फेल्ट कि ओ हाँ ये चेंजेस तो होने ही चाहिए थे। सो एक्चुअली ये ड्राफ्ट प्रपोजल है, वेट आई विल ओपन द फाइनल प्रपोजल, एंड एक बार विल प्रपोजल देख लेते, बिकॉज दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग, एंड उसके बाद we'll set the stage for questions if there is any. Probably you can guys can leave. So I think, hmm, just a second. Let's see if there's a proposal. Yeah. Hmm. I hope this is visible now. Yeah, carry Hmm. on. Okay, ये वापस proposal draft क्यों खुल रहा है? Just a second. Okay, एक बार proposal draft ही देख लो ना. नहीं, actually finally, sorry, finally. So what I did is basically this was the, अच्छा इसके बाद one of the thing is very important कि ये proposal बनाने के बाद ऑर्गेनाइजेशन के मेंटर्स को दिखाना होता है कि मेरा ये प्रपोजल है, एंड यू सेट देम, वो स्लैक कम्युनिटी में बात होना स्टार्ट हो जाती है कि प्रपोजल पे आप बात करते हैं, एंड आप उनको दिखाते हो, और उसके बाद वो प्रपोजल पे कमेंट्स करते हैं कि हाँ ये चेंजेस करो, ये चेंजेस करो, ये चेंजेस करो। सो देयर वर फ्यू चेंजेस व्हिच माय मेंटर सजेस्टेड, और उनको करने के बाद ही मैंने करा, बिकॉज अगर तुमने उनको नहीं दिखाया, एट द एंड ऑफ द डे उन्हें ही सिलेक्ट करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि चाहे तुम्हारा प्रपोजल कितना ही अच्छा क्यों ना हो, कितना ही अच्छा क्यों ना हो, ये जाकर आप अपने मेंटर को दिखाओ कि भाई ये मेरा प्रपोजल है, एंड गिव मी रिव्यूज ऑन इट। सो ही गॉट लाइक गिव मी लॉट ऑफ रिव्यूज, जैसे डिजाइन वाइज चेंजेस एंड वो सब थे। सो दिस इज जनरल फॉर्मेट, मेंटर कौन है, पर्सनल इन्फो, सो आई हैड दिस ऑल पर्सनल इन्फो, टाइम जोन मेंशन भी करना होता है, लॉट ऑफ पीपल डोंट गेट दिस पॉइंट, बिकॉज ये भी एक बीटी रहती है, आई एम वर्किंग इन सम अदर टाइम जोन एंड Donnie is working in some other time zone. So we need like the best timing can collaborate is around 10:30 p.m. and for him it is 1 p.m. So वही टाइम सेटअप होता है हम जब मीट करते हैं, तो वो टाइम जोन बहुत मैटर करती है, लैंग्वेज बहुत मैटर करती है। आई मेंशन माय गिटहब, आई मेंशन माय लिंक, आई मेंशन माय स्लैक नेम, लोकेशन, लैंग्वेज, बिकॉज लोकेशन भी मैटर करती है। सपोज लाइक स्वप्निल इज फ्रॉम महाराष्ट्र, and I think Pune and Maharashtra. So if we are from the same like area, that is also preferred कि वो अच्छे दोनों same area में, that would be much easier for them work. एक और चीज होती है मेंटर का, बेसिकली फैमिली मेंबर कोई भी सिलेक्ट नहीं कर सकते, सो वो चीजों को भी ध्यान रखा जाता है, तो वो चीजों को भी बैकग्राउंड चेक किया जाता है। फिर that is my university info, what is BLT, because this is not only proposal I'm giving to BLT, that was basically possibility, it is also proposal reviewed by Google also, उनको भी देखना होता है कि तुमने क्या लिखा है, और BLT तो फाइनल करता ही है कि ओ वी लाइक दिस प्रपोजल, उसके बाद गूगल भी देखता है जैसे कि ओ ये स्टैंडर्ड्स पे मेंटेन कर रहा है, देन वील सेलेक्ट।
So you explain them कि okay BLT क्या है, why do I love working for BLT, everything I mentioned, contribution, this is the very important thing. अब इसके अंदर मैंने मर्ज पुल रिक्वेस्ट डाली थी, सो इट इज सिंस 27 थे और उसके बाद मैं कंट्रीब्यूशन करके 29 पुल कर रहा था, 27 टोटल पुल रिक्वेस्ट मेरी 34 थी, इश्यूज मैंने 31 क्लोज करे थे, इशू क्रिएट मैंने जो करे थे दिस कमेंट्स प्लस रिव्यूज दे थे, मैंने 2 सिक्योरिटी बग्स निकाले थे, दैट वाज आल्सो समथिंग आई मेंशनड, जो मैंने एक स्लैक पे रिपोर्ट करा था और गिटहब पे रिपोर्ट करा था. लीडर बोर्ड्स बन जाते हैं बिकॉज इतने लोग, जब बहुत ज्यादा लोग आ जाते हैं ना, तो ट्रैकिंग बहुत मुश्किल हो जाती है, सो दे जनरली मेक अ लीडर बोर्ड. सो इन लीडर बोर्ड 2024 आई वाज सेकंड एंड लीडर बोर्ड V2 आई वाज फर्स्ट. सो वो चीज बहुत प्ले डाउन करती है, तो मैंने लीडर बोर्ड भी डाला था जस्ट फॉर देम टू सी दैट, क्योंकि लीडर बोर्ड में क्लियरली था कि जो टॉप 5 होंगे उनको हम प्रायोरिटी देंगे, दैट इज क्लियर कि उनको प्रायोरिटी मिलेगी. एंड उसके बाद आई सेड देम कि आई हैव बीन सिंस that कि 15 February till 18 March I have constitutively made the first position in the leaderboard too, जो मैंने specifically mention करा था. About me मैंने लिखा, उसके बाद project description, exactly मैं क्या करूंगा, पूरे project का description, and then I go to project goals जिसके अंदर heading. अब ये format जो था ये मैं बहुत strictly और बहुत अच्छे से आगे से follow करता था, जो I think हर proposal में follow होना चाहिए. That is, first you give them a heading, then you need why we need it and the current state. भाई हमको Sheesh, क्यों चाहिए और अभी हमारे पास. हाँ something, just a minute. Meeting will end in next 10 minutes, so you have to do things fast हाँ because time limit is there. ओके, ठीक है, विल एक्चुअली कंप्लीट इन टाइम. सो बस ये एक मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ. फिर टेक्नोलॉजीज इसके अंदर इन्वॉल्व, एंड आई मेड डिजाइन सिंस आई न्यू फिग्मा, आई नो डिजाइनिंग, सो मैंने डिजाइन बनाई, वर्क फ्लो बनाया कि एग्जैक्टली कौन सी चीज कैसे कनेक्ट करेगी. फिर उसके बाद मैंने इम्प्लीमेंटेशन डाला कि मैं ड्यूरिंग GSoC क्या कोड्स होंगे, एग्जैक्टली कोड्स दिखे कि ये कोड होंगे और उनका स्क्रीनशॉट लगाया. और उसके बाद ये सारे कोड्स थे उसके अंदर, और फ्यूचर डेवलपमेंट कि अगर हम ये चीज अचीव कर लेंगे उसके बाद और क्या किया जा सकता है, दैट इज आफ्टर GSoC में. ऐसे ही सब जगह मैंने सेम फॉर्मेट रखा था, ऑलमोस्ट हर जगह ही वही था. तो ये था, एंड उसके बाद या सो और ऐसे मैंने बहुत सारे इश्यूज डाले थे कि ये पे मैं काम करूंगा, सो इन सारे इश्यूज पे मुझे इस GSoC पे काम करना है. So I'll be working on it. Then there is an important part that is this final documenting this journey में ये भी एक अच्छा point होता है कि मैं इस पूरी journey को document करूँ. Then you give them a timeline कि मैं इस timeline पे रहूँगा. This is a very strict timeline कि अगर मैंने कह दिया तो मैं इस पे रहूँगा ही रहूँ. Deliverables होता है कि मिड टर्म तक मैं ये दे दूंगा, फाइनल इवैल्यूएशन तक मैं ये दे दूंगा. कमिटमेंट्स आप बताते हो कि मैं इस टाइम पर बेसिकली क्या कर GSoC के टाइम पर मेरा क्या क्या कमिटमेंट्स रहेंगे, वो भी आपको उनको बताने पड़ते हैं, बिकॉज दे नीड टू बी. बाद में ऐसा नहीं हो सकता बोलो ओ नहीं मेरे पास ये काम भी अभी आ गया है, मेरा तो एग्जाम है, वो चीज नहीं चलती है. फिर why me, because I am having a tech stack related experience. I said I was a backend developer, I was an upcoming summer intern at ISRO, I have been working on a bitsa portal, LeadX is a tool I'm working, passion is one thing, and after GSoC. So ये एक लाइक आई पर्सनली फील एक आइडियल और पूरा वो रहता है जिस प्रपोजल होना चाहिए. If there is any other like questions I want to ask, they can now. So rather than going to chats, we'll actually, if there is we'll be taking like raise your hands and ask questions directly, Yeah, it would be because great. we are If short any with the question, time. just raise your hand. Guys, any question? Yeah, so I don't think so that any one of you have any question like. So, yeah, here. Yeah, okay. Just a minute. Yeah, yes, this. Yeah, Yeah, so my when basic you. question. Hello. Yeah. Yeah, so my basic was, do you think the internships you put at the end affected your proposal? Are they actually necessary What before you intern? the internships you put at the end, internships and the projects you have done already? Do you think that has That significant impact? या डेफिनेटली, बिकॉज उनको जनरली ऐसे लोग देख चाहिए होते हैं जिन्होंने, मतलब ऐसे ही लोग जनरली वेब डेव के अंदर प्रेफर किए जाते हैं. जैसे आई हैड एन एक्सपीरियंस फॉर कॉलेज फेस्ट एंड नेटवर्क ना, सो उनको जनरली ऐसे लोग चाहिए होते हैं जिनको वो एक्सपीरियंस हो. तो ये जो इंटर्नशिप्स और ये प्रोजेक्ट्स और कॉलेज प्रोजेक्ट्स होते हैं, ये काफी हेल्प करते हैं प्रपोजल एक्सेप्ट होने में. आई थिंक दैट वाज योर क्वेश्चन, राइट? दैट इंटर्नशिप्स हेल्प्स इन गेटिंग एक्सेप्टेड.
Next is So yeah, DK. But You can yeah, ask. actually, am I audible? Yeah, yes, you are. yeah. Yeah, but yeah, actually, I am not in any of the clubs like that are in coding or something like that. So I have literally zero experience in all these things. So Hmm. how should I, make my profile better or work on these things Okay. that can help me So in the cracking this? देखो क्लब्स एंड ऑल देयर आर एन अपॉर्चुनिटी अगर तुम्हारे पास है तो अच्छा है नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं ठीक है नाउ व्हाट यू कैन डू इज वर्किंग ऑन अल्टरनेटिव्स दैट इज अब दिस इज द टाइम कि तुम जीसॉक में जैसे अभी तुम कोई 2 महीने जो है ना कुछ पहले तो स्किल सीखो ठीक है उसके बाद वही कि कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट्स करो स्टार्ट मेकिंग ऑन या फन प्रोजेक्ट्स कि भाई मैंने ऐसे ही कोई टूल बना दिया नहीं कर दिया एंड वन थिंग इज क्लब्स आर जनरली जज फॉर एन इकोसिस्टम बेसिकली जहां पर तुमको सीनियर्स एडवाइस कर पाए एट द एंड ऑफ द डे काम तो देखो लाइक ठीक है कर रहे हैं वो अलग बात है बट मेन जो चीज है दैट इज इकोसिस्टम फॉर लर्निंग प्रोसेस तो उसके लिए तुमको सीनियर्स वैसे भी मिल जाएंगे कोई भी क्लब कोई भी डिपार्टमेंट का सीनियर कभी मना नहीं करेगा टू आंसर योर क्वेश्चंस एंड क्वेरी जिस भी फील्ड में है जस्ट फाइंड अ सीनियर एंड आस्क हिम क्वेश्चंस कि आई वाज गेटिंग अ प्रॉब्लम इन दिस सो एंड सो थिंग कैन यू हेल्प मी कभी मना नहीं करेंगे ठीक है सो वो चीज कर सकते हो उसके अलावा प्रोजेक्ट्स बनाओ खुद के एंड देन वर्क फॉर ओपन सोर्स दैट इज वन थिंग अभी से भी स्टार्ट कर सकते हो कोई मना नहीं करेगा बट अभी वैसे तो मतलब सेंस नहीं अभी वो हम पे ही फोकस कर रहे होते हैं बट ये कहूंगा कि लाइक काइंड ऑफ अभी कोई और इंटर्नशिप्स ले लो और ये सब चीजें बहुत सारी चीजें तुम कर सकते हो तो टू बिल्ड दैट एक्सपीरियंस एंड बीइंग अ क्लब एंड इट्स नॉट अ पॉइंट बिकॉज एक एक्सटेंट तक ही क्लब्स हेल्प करते हैं और सिखाते हैं उसके आगे वो चीज बहुत मोनोटोनस हो जाती है तो वो पसंद नहीं आती है so don't feel low if you are not into any clubs that doesn't matter at all actually Any other question, guys? one chart I can see of Kritika that I'm trying to shift from bug hunting to dev. So any advice? Yeah. So bug if you're going to get into good into bug hunting now, first web dev aana chahiye because before knowing how to destroy a thing successfully, I'll say you need to know how to actually create that thing. तो पहले बनाना सीखो और फिर उसे तोड़ना सीखेंगे तो बग हंटिंग में तुम तभी अच्छे होगे जब तुम डेवलपमेंट में अच्छे हो तो yeah so switching into development that is the best thing to get into good at hacking and like this I think bug hunting Kritika is not in meeting right now. hmm. It's an in general answer to everyone so or So, कोई guys, any other question? Otherwise, we will be just ending this meeting in a while. Yeah, I think will this Dasvi is having recording be shared? I mean, will it be available or? yeah it will be uploaded on Bitsin Galaxy channel and the Whisper Lane channel so you can view it. Yeah. So, guys, Okay. this is a short introduction. So, I just ran host of the podcast, The Whisper Lane. So, I have a channel with name The Whisper Lane with Aryan. So, you can just check it out. You get the link from the chat section. And guys, since you are staying till the last, so I just uploaded today a carousel post on five free web development courses. So you can just check out on my Instagram and LinkedIn. So Yeah and if you are searching for that. also since you guys were all like till last just I have shared my mail so if any one of you want this like ppt and other things we'll be sharing it to you just give me some more time I'll be adding more resources to it and like just have my mail if there's any doubt related to GSoC other than GSoC anything you can ping me whenever you want to you have having my LinkedIn you can just go and type sheets and you'll get it and yeah, I'm always available. That's not a problem. You want to make a call to me, random chit chat, anything will work. You can also Any contact other me on my questions? LinkedIn or Instagram if you want to contact. Like if you have any doubt regarding the freelancing part or LinkedIn part, you can surely contact me. You can also contact me for the web development part and for GSoC part you have sheets. So and also you can just tell me in the chat section if you want a free workshop on LinkedIn because I'm planning to do one workshop in this month or maybe in the next month. So either I will be uploading a video on my YouTube channel or I will be doing a webinar like this. So if you are interested, just tell me. Yeah. Okay. So Ankit is okay. So I will be just you can subscribe to my channel. I will be
update you on that when will be going to happen. Yeah, so if there are any questions now, I think LinkedIn or mail would be a better option. So we can now just continue this You meet can and follow Shirsh on LinkedIn also, and me also. Like I'm usually anything will active work. on LinkedIn Mhm. or Instagram both, so you can contact me anywhere. एक बार like I just put my LinkedIn and Shirsh LinkedIn in the chat section again. Just a second. So this is Shirsh LinkedIn, and other one is mine. I just pinned mine one. Like if you want to check or just let me check it again. Okay, Ananya is Okay, raising hand. so one question is there, like, why did you leave DVM? Was it too hectic? Well, departments are kind of relationship and it didn't work out. That's the answer. Ananya also raising her It hand is for the question. hectic, but it is worth it, I'll say. Yeah. Ananya, you are asking some question like you are asking raising hand. Okay, guys, we are ending this meeting then. I believe no more So questions thank are you for there. joining. Thank you joining for Any us. day you Like can guys, ping me up for this thing. so you can just Bye. contact us anytime, whenever you want. It may take time to answer your queries on LinkedIn or Instagram, but yeah, we will definitely answer them. And LinkedIn and share LinkedIn in the chat section again. Just a second. So this is Sheer's LinkedIn, and other one is mine. I just pinned mine one. Like if you want to check or just let me check it again. Okay, Ananya is Okay, raising hand. so one question is there, like, why did you leave DVM? Was it too hectic? Well, departments are kind of relationship and it didn't work out. That's the answer. Ananya also raising her It hand is for the question. hectic, but it is worth it, I'll say. Yeah. Ananya, you are asking some question like you are asking raising hand. Okay, guys, we are ending this meeting then. I believe no more So questions thank are you for there. joining. Thank you joining for Any day us. you Like can guys, ping me up for this thing. so you can just Bye. contact us anytime, whenever you want. It may take time to answer your queries on LinkedIn or Instagram, but yeah, we will definitely answer them.